what is the right way to live life? What is happiness? ये जिंदगी क्या है? Why do I dream? Who's wrong and who's right? We all have all these kind of questions going through our mind throughout the day. I can understand. So, in today's video, I am going to introduce a field that might take you closer to all the questions के answers. Keep watching. Hi all, welcome back to my channel, and in today's video I am going to talk about a field of study that is philosophy. We all have heard philosophy in different contexts, like अपना ये philosophical ज्ञान मुझे मत दे, प्लीज अपनी philosophy अपने पास रख. हम सब ने सुना है ना ये सब. But in today's video I am going to tell you how important it is to learn and know about this field and get better. So सबसे पहले, what is philosophy? In simple terms, philosophy is the way to think. It is the way to think how you think. Just that. Philosophy हमें सिर्फ ये बताता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम कैसे सोच रहे हैं, हम कोई आंसर तक कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. So it helps you to question your belief system, your predefined assumptions, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि that you have to do this, you have to do that, this is wrong, this is bad, this is right. हम उन सब चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो गलत है तो वो गलत क्यों है और अगर वो सही है तो वो सही क्यों है. There is no bias in philosophy, and it is the way we critically reflect on our own views and on the views of others. मेरे हिसाब से ना philosophy chemistry जैसा है. Chemistry is about elements, and I think so philosophy is about humans. Because philosophy helps you to understand the most fundamental things about the universe. It helps you to go to the deeper levels and not just hover around the branches. वो सिर्फ ऊपरी वाला शो नहीं है. It demands, this field demands to go deeper and ask questions and get answers. That's all is philosophy, and that is basically philosophy. And now why it's important, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है. सो व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट. हमें कभी रियलाइज नहीं होता कि हमें फिलॉसफी की ज़रूरत है, बिकॉज वी फील दैट वी आर सो मच सेल्फ सफिशिएंट इन आवर ओन सेल्व्स कि हमें सब चीज़ों के आंसर पता है, पर हमें सब चीज़ों के आंसर पता नहीं होते. हमें बेसिकली देखा जाए तो ओनली 5% चीज़ों के बारे में पता होता है जो हम अब तक आए हैं, क्योंकि आधा तो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, आधा हम खुद ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं और आधा हम दोस्तों से सीखते हैं. हम थोड़ा सब लोगों से सीख लेते हैं, पर हम कभी जो चीज़ें हमें सिखाई गई होती है उस पर क्वेश्चन नहीं करते. वी नेवर एनालाइज व्हाट वी नो. वी नेवर एनालाइज कि हमें क्या पता है, क्या सही है, क्या गलत है. हमें पता नहीं है और हमने ना ही कभी क्वेश्चन किया है. और आज के ज़माने में, दैट इज़ इन आवर जनरेशन, दिस learning about philosophy is very important because we have literally stopped thinking about things. हमें पता ही नहीं है सोचना कैसे है. हमारे खुद के ओरिजिनल थॉट्स अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम सबको पता है that we are getting influenced from something or someone. And I feel that's why it is very important for all of us to learn and know about this field and to pursue it. मैं नहीं बोल रही कि जाके कॉलेज में एडमिशन ले लो ना. You don't have to do that because it does not that's the beauty. क्यों इसमें तुम्हें कुछ टीचर नहीं चाहिए. ये ऐसी फील्ड है जो तुम खुद अपने आप पढ़ सकते हो, तुम खुद अपने आप कर सकते हो. So why it's important? Firstly, it opens your brain. If you are opening yourself up to a lot of ideas, to different belief systems, to different things, then
it will help you construct your thought in a better way, और तुम समझ पाओगे कि अगर कोई इंसान मुझे कुछ बोल रहा है, whether it is constructive or not, and it helps you increase your collaboration skills. इससे तुम लोगों से collaborate कर पाओगे. You will be able to learn from each and every person in your life. It will help you, and that's why I think it is very important. First point. Second point, it improves your problem solving abilities, because problem solving में हमें root cause जानना होता है. We have to go in depth. We can't just solve a problem ऊपर से. We have to go in depth. So by learning philosophy, it will help you in other domains also, जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए. और आज के ज़माने में वी ऑल नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, otherwise there is nothing. So secondly, it helps you improve your problem solving skills and become better thinker. It helps you become better thinker. In today's world where we all are influenced by something or someone, हमें वो एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारे in which we are the authority, no one else. So learning about philosophy and knowing about this field, basically pursuing it, it will help you open up your brain and it will help you to gain authority of your own thoughts. क्योंकि अभी तुम खुद ऑब्जर्व करना, whenever you are talking to someone, you are either influenced by someone, something, कोई वीडियो तुमने देखा था, तुम वो थॉट लेके आ रहे हो और तुम बोल रहे हो यही हो रहा है. Where is your original thought? Where is you? Where are you? Where are your own thoughts? So basically, it will help you take the authority, take the charge, and to think and to keep your own point, take your own stand. तुम्हें किसको वोट करना है, तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं इसको वोट करने जाओगे. You will analyze the data, you will look for yourself, and then you will go and vote. And lastly, I feel it's important because it basically gives you clarity of what's important in life. आजकल बहुत distraction है. I think in this world, it is everything is distracting. हम छोटी से छोटी चीज़ों को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इतना नॉलेज, इतना भंडारा है हमारे पास नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि कौन सी चीज़ डिस्ट्रैक्टिंग है, बिकॉज हम उसमें ही खो जाते हैं. तो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू gain clarity on what's important and what's not, so that you will be able to focus and stick to one particular thing and not go here and there looking for answers, looking for things that are distracting you. ये था. I don't know whether you will take my advice and start reading or learning about it, but I really hope that you guys start learning about this field. It is a beautiful field to study about. Like my video, so please remember to subscribe and like my channel, and I promise to be consistent from tomorrow. See you guys in next video. Bye.